because 17th December was supposed to be first day. And you asked me so many times then when offline classes will start. It was 17th December. But still, I hope we have all forgotten that today is 17th December and we have joined online. Okay. Yeah. Because notification was that from 17th of December, the classes will be in offline mode. But we have joined online mode. Okay, because this is the last day before the winter vacation. Then the university will reopen on 3rd of January. Now let us start our class because we are now have developed the habit of joining online. That let us begin our class online. And I don't know what will happen in month of January, depending upon the corona situation. Now, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, last time we were discussing some strategies of Niti Aayog. And very briefly, I had mentioned 3 different time period of strategies. That is 3 years, 7 years, and 15 years. And then we were having this framework of India at 75. And I was just reading out the components within the India at 75. I believe that we are here last time only. Yes, sir. Because it includes 41 areas. It will not be possible for us to discuss all 41. Moreover, you are not required to write details of the 41 areas, but we must have an idea about what are the 4 components, 4 dimensions, or 4 sections within which 41 specific areas have been included as a strategy of taking India at 75. Now, last time I was just going through these 11 areas, and there were some questions from your side regarding the meaning. Now, if you have still any doubt in any particular term, then you can ask me the question so that I can give you just little idea about that particular term. Go through it again, once again. Do you have any question? As far as meaning of a particular is concerned under these 11 areas? Sir, what is labor reforms and what is value chain? Okay. Now, under the labor reform, there are so many components, which we are not practicing in India. And there are some new terms also under the employment or labor connectivity. There is a new concept nowadays that is known as gig economy, GIG, gig economy. Can you explain what is the meaning of the term gig economy?
Gig economy, GIG. Do you have any idea? Do you have any idea about gig economy? No, sir. No, sir. Now, this is a very recent terminology. Gig economy simply means when any entrepreneur hires the workers only on a very temporary basis. Very temporary basis. Or in other words, you can also have the second model where workers are working not on permanent basis but a part-time basis for a specific time period also. That is known as gig economy. And this is the emerging model across the world, that is in place of full-time permanent employment. Industrial sectors are preferring to have part-time or temporary employment. That is one of the major labor reforms. You got the meaning of gig economy, gig, GIG. And in these type of employment situation, the remuneration or the reward is given to the workers on the basis of their productivity performance. This is also one component of labor reforms. You got the meaning? What is labor reforms? Labor reforms can also be hiring and firing. You hire the laborers for a particular time period and you fire. And in most of the construction area, you see we are using only these type of gig laborers. Suppose you are getting a house constructed. You don't have a permanent employee for the house construction. You hire for a particular time period and you make the payment. These all are the new dimensions of labor reforms across the world. Because it reduces the cost and burden on the employer. And laborers are also giving their full potential because it is productive based remuneration also. These are all dimensions of labor reforms. In very briefly, in place of old labor laws, you move to a new labor laws. But sir, it will have a negative impact on the laborers, no? No, it has both the components. From laborer's point of view, you may think, but from a producer's point of view, of economic point of view, you may think just opposite. Now, since you have said it is a negative impact, that's I will just give you one very interesting example so that you can understand. Now, till some years ago, the ready-made garments sector in India was exclusively reserved for small scale industries. Means medium industries or large industries were not permitted to enter into the small industries area, under which I'm just giving you one example, that is the ready-made garment. It was reserved exclusively for a small sector. Means other industries were not permitted to manufacture ready-made garments. Later on, since 1990s, when we started these reserving many areas, including small scale industries also, then we started taking out a number of items from the reserved list of a small sector and to make it free
for other levels of, that is including medium industries, including large industries, etc. There was a time in India when more than 800 items were reserved exclusively for a small sector. And the small sectors were defined on the basis of fixed capital used in one particular manufacturing unit. It was very low level. If I tell you earlier, it was only 60 lakh rupees of machines and equipments and tools, which was the limit of a small sector, with not beyond that. If you invest more than that, you are out of the definition of a small sector. I'm talking about 1980s and late 80s, and also till early 90s. Now, if you look at the ready-made garments, there was a time, if you compare India and China, so in India and China, raw material, I'm taking was only one example, that is ready-made garments. Raw material for ready-made garments will cost you almost equal in both the countries. Similar cost. Technology is almost similar. But productivity is totally different. And due to that situation, the price of the item in China and that same item in India differs with a very huge margin. Now I'll tell you this interesting story, that when ready-made garment was taken out of reserve list in India, then a group of ready-made garment manufacturers, they have their own association also, the president of India's ready-made garment manufacturers and other people, means a group of manufacturers from India, that is, who are manufacturing ready-made garments, they decided to visit China. And they had correspondence with China's special economic zone, where ready-made garment manufacturing was done on a larger scale. And they contacted one particular unit, and a time was fixed. At that fixed time, this group of Indian ready-made garment manufacturers visited that Chinese firm in China. And when they reached there, the security guards took the entire team to the chamber of the manager. Manager served them tea, and they had some chit chat. And then manager said, "Okay, let us go to my manufacturing unit and see what is going on." The manager took that entire team to the unit in the same vicinity. Then one gate was there, gate was opened, and I'm just telling you the reaction of the president of India's ready-made garment manufacturing group. He said when the gate was opened, he saw a manufacturing unit. The size of that unit was bigger than a football ground. Bigger than a football ground. I'm quoting his article, what he wrote in his article. He was surprised to see the huge size of the manufacturing unit. And there were so many rows. And in each row, number of laborers, workers were stitching or cutting their ready-made garments. They were line. He wrote that all of us visited there, moved between the rows, and came back
After some time, we saw everything, how manufacturing was going on, and came back to the chamber of the manager again. Then manager said, okay, I have shown you the workers, manufacturing, everything. I hope you are satisfied, and so and so. Then this person from India said that, but I have one question. He said, what? What is the question? He said, there was no welcome to our team by your workers. I was expecting some garlanding, some aarti, some music and something, because the foreign team has come to visit them, and there was nothing. And he said, I'm very sorry. The gentleman from India said, I'm very sorry that even no worker has greeted us on workers, or even seen our faces. They even saw our faces also. What is the purpose? What is the issue? Are we not welcomed? Nobody is bothered about us. Then Chinese manager said, oh, I'm very sorry if you are carrying this impression. This is not, we have not welcomed you. Actually, the workers have no time to talk to you or to do anything for you, because all workers are paid as per their productivity. That is noted down. If they dance with you, they welcome you, they garland you, they will at least spend some time in these activities, and that time also means some earning, because they have no permanent or a fixed amount of payment. The payments of each worker depends upon what they have contributed in that day. That is why we always say that almost the labor efficiency, labor capability in India and China are almost equal. But the productivity of a Chinese laborer as compared to India is almost 2.5 times more. It means if an Indian laborer manufactures 10 shirts in a day, the Chinese worker will manufacture 25 shirts in a day. Naturally, it will reduce the cost of production, because labor cost is most important. When you reduce the cost of production, price will also reduce. And that is why Chinese items, in this example, are also low priced, and they have better competitiveness in the world market. I've given a very simple example, that the experience of Indian manufacturers of ready-made garments. Now you tell me, what do you say? It is negative from their side, positive from their side. What do you ask the question? And then tell me, suppose you are the manufacturer, whether you would like to have the Indian model or Chinese model. Now tell me yourself, you be the manufacturer of the garment unit. Now tell me, what is your reaction? Sir, I would like to have Chinese. So I would like to not say Indian. I don't know what I'm saying. Please say it clearly. Which model Chinese for your model. manufacturing unit? Chinese model or Indian model? Chinese model. Now tell me now. Sir, I think from a Indian model, because they are very liberal. sir, I think from a क्या कहते हैं? Sir, I am from a employer's perspective, it is in their benefit. But I am talking about from the economy's perspective, from GDP perspective. I am talking about from economy's perspective. sir, from economics perspective, it will be beneficial. Which will be contribute more in GDP? Indian Sir, model. the Chinese model. Chinese model. That is the answer. Then if you are having growth as your prime objective, that is GDP is prime objective, then you think about whether we should go for labor reforms or not. That is my simple question. Okay, that was a simple example which gave you an idea
about India versus China. That is why there is very famous sentence that China is world's factory and India is world's office. Office means service sector, factory means manufacturing sector. Therefore, if India wants to catch the Chinese manufacturing unit, be competitive with the China, then you need to go for labor reforms. Have to adopt the new models. Otherwise, you will not be able to compete. That is why China has captured the world manufacturing products. And in India-China trade, India suffers a huge deficit, negative balance of trade vis-a-vis China. That is the reason. Unless we innovate, unless we reform, we'll be nowhere in the world market, because in world market, the competition is the main key, cost cutting is the main key, pricing is the main key. That is the issue. Therefore, the drivers, what can drive the economy, and that reforms and employment is also one of the drivers. I hope you have now a fairly good idea about what is the mean. Now, second, you said value chain and rural infrastructure. That is basically with the farming sector. Value chain means think about any agriculture produce grown by the farmer and ultimately reaches to final, that we say from farm, F-A-R-M, to fork, F-O-R-K. A table of the consumer final, farm to fork. Now, in this journey of any agriculture produce, lot of intermediaries, lot of steps are involved. That is, I say for example, any fruits, vegetable, etc., or food grain, grading, sorting, packaging, storing, transporting, then wholesalers, then retailers, etc., etc. And it may also go to the manufacturer and convert into some manufactured food item, again storing, again transporting, again wholesaler, then again distributor and the final consumer. Various steps involved in this entire process, that is from farm to final consumer, is value chain, is known as value chain. Value chain can also, in context of within the country, or value chain can also be between. So suppose the item is exported, again it is a value chain. So unless we have an efficient value chain, the farmers will not get remunerative prices of their products. Therefore, value chain and rural infra, these are most important to support farmers to have better income to produce. We still lack the effective rural infrastructure for farmers. We lack an effective value chain. They are inefficient or high cost, etc. That is the need of the hour, that we have to develop our value chain, which involves in time cutting, cost cutting,
and quality of the produce. We need cold storage vans to transport the perishable items from farm to cold storage or to the market, final market. We need vapor treatment machines. We need X-ray machines for the produce, farm produce, to assess the quality. Still, we lack a good packaging system for the farm produce. Grading, sorting, polishing, packaging. There are so many steps are involved. These entire chain, in a nutshell, is known as value chain. I hope now you understand the main value chain. Any doubt about that now? Now, any question from your side? Are you able to hear me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is financial inclusion? Okay. I'm coming. The next part, we will have a little discussion about inclusive development and inclusive growth. In that, I will cover financial inclusion also as its component. Unless you understand inclusion, you will not be able to understand financial inclusion. That is a separate segment in this chapter only. I'm just coming to that part. Just wait for a couple of minutes, then I hope we'll be able to reach on this part. And if not today, then on next day also. I'm talking about that because inclusion or inclusive growth, focal theme of 11th and 12th fire. That is very important. Action is a part of inclusive growth that we'll discuss later. But I hope that last time we have given a simple understanding meaning of this financial inclusion. I remember that I was talking to you about financial inclusion very briefly. Yes, sir. Okay, I will come again to that part in little detail, not briefly, but little wait for some time. Then moving toward that point only. Now the second dimension is infrastructure, which again covers 11 areas. I have mentioned here: energy, surface transport, railways, civil aviation, port, shipping and inland waterways, logistics, digital connectivity, smart cities for urban transformation, Swachh, water resources, and these are 11 areas under the concept of infrastructure. Please, and if you want to know the meaning of one, then I can discuss you. Sir, civil aviation. In English, in which language? Okay, tell me what are of energy in Hindi? Sir, urja. Urja, very good. What is surface transport in Hindi? Sir, by road transport.
और इन इंग्लिश यातायात। सरफेस ट्रांसपोर्ट मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट या सड़क परिवहन। सड़क सरफेस मीन्स सड़क। सर सड़क यातायात। सड़क परिवहन। यस सर, ट्रांसपोर्ट। चलिए दोनों आएगा इसमें, दोनों जाती आएंगी। सड़क मार्ग, रेलवेज। सर रेल आपने मार्ग। यातायात क्यों कहा? नहीं यातायात क्यों कहा आपने, परिवहन क्यों नहीं कहा? सर वो याद आ दोनों गया में क्या था। फर्क है? नहीं आपको अंतर समझना कि यातायात शब्द मतलब परिवहन का मतलब क्या है? सर परिवहन ब्रॉड टर्म है, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, लाइक दैट। ना बिल्कुल गलत, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बाकी रोज एक कक्षा भी सीखते रहिए, अंग्रेजी का भी एक सीखते रहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। यातायात और परिवहन में अंतर यह है कि यातायात मनुष्य का होता है, परिवहन सामान का होता है। वस्तु का परिवहन होता है, मनुष्य का यातायात होता है। आप ट्रेवल करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई भी वाहन है तो वो यातायात का वाहन है, परिवहन का नहीं। अगर आप स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, इट इज यातायात। बात करें यातायात परिवहन में क्या अंतर है? जैसे क्या क्या अंतर फ्री गाड़ी और माल गाड़ी में क्या है? किराया और भाड़ा में बताइए क्या अंतर है? किराया, फ्रेट एंड फेयर, फ्रेट एंड फेयर, जीएसटी, फ्रेट एफएआर, फेयर है, किराया भाड़ा। जब आप यात्रा करते हैं तो आप किराया चुकाते हैं। बल्कि से माल ढुलाई करते हैं तो माल का भाड़ा होता है, माल का मन का है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यातायात और परिवहन में अंतर कर लीजिए। एनीवे, सरफेस मींस रोड, रेलवे मींस रेल, और सिविल एविएशन मींस वायु। ये तीन अलग अलग यहां पर आपके सामने, और चौथा उसके बाद आ रहा है। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सिविल एविएशन वायु मार्ग, और चौथा है उसके आगे पोर्ट, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे, यानी बंदरगाह, शिप्स, जहाजरानी, और तो ये जो चार पॉइंट हैं आफ्टर एनर्जी, ये चारों पॉइंट जो हैं वो यातायात व परिवहन संबंधित अलग अलग सेगमेंट्स के। क्लियर? चारों क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपका लॉजिस्टिक, आइटम, दीज आर ऑल लॉजिस्टिक्स। डिजिटल, इंटरनेट, डिजिटल, तो पूरा डिजिटल आप जितना डू थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन, दैट इज डिजिटल कनेक्टिविटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, दैट ऑल कनेक्टिविटी। जब आप एटीएम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिजिटल कनेक्टिविटी। आप बैंक के से जुड़ रहे हैं किसी और स्थान से थ्रू डिजिटल कनेक्शन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज स्मार्ट सिटीज फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नगरीय रूपांतरण के लिए स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत मिशन, which also creates the health impact, then water resources,
very important infrastructure, and lastly, sustainable environment. Satat which is conceived not only for our generation, but it will generations also. A sustained, good environment. मेरे ख्याल से तो all 11 points are simple. Now, if still you have any doubt, then ask the question, what is the meaning of this point? I hope I have given you briefly idea of the meaning of each 11 points. Now, if you have any question, just tell me if you have any question. सर जैसे स्मार्ट विलेज की प्लानिंग नहीं हो सकती इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या फिर से बोले? Sir, smart village. Please repeat. Now, smart village also considered, but not a part of these 11 areas decided by नीति आयोग. ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके अलावा और बातें खुद नहीं सोच सकते हैं. हम लोग इसके अलावा बहुत सारी बात सोच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वो पॉइंट को दे रहे हैं जो नीति आयोग ने जिनको न्यू इंडिया 75 में कवर किया. हम लोग इसके अलावा बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं. हम सोच सकते हैं रूरल अर्बन कनेक्टिविटी सोच सकते हैं, and not these areas which have been नीति आयोग ने क्या स्पेसिफाई किया है, हम उसकी बातें कर रहे हैं. और जहां तक स्मार्ट की बात है, हम लोग स्मार्ट उसकी बातें कर सकते हैं. स्मार्ट कम्युनिटीज, स्मार्ट पीपल as an individual, smartness does not mean that good clothing, but your smart behavior, your smart personality, smart knowledge, that is the of smart persons also. So you can think about so many dimensions of smartness. But since a smart city is a big project of flagship project of the government, that is why they have included smart cities for urban transformation under infrastructure. Why urban transformation? Because with the change in the global economy, with a change in the domestic economy, change in the socio-economic dimensions of the country, more and more pressure of population is on urban system, not on rural system. There is huge migration from rural to urban areas. The urban system is under great pressure. That is why they are talking about smart cities for urban transformation. It does not mean that rural areas have been neglected. There are so many schemes for rural development also. And there is also, in this country I can mention, there is a mission called Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission, RURBAN, Rurban Mission. That is bridging the gap between rural and urban. Divide between rural and urban have to be bridged. That is Rurban Mission also. मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी बातें मैंने बता दी. हम लोग यहाँ पर उन एरियाज का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें नीति आयोग ने अपने स्ट्रेटजी में शामिल किया है. और इसके अलावा हम बहुत सी बातें सोच सकते हैं. हाँ, कभी अगर ये लिखने को आए कि क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है, इसमें इतने भी जोड़ते तो बेहतर होती है, आप ये अपने से उसकी आलोचना में लिख सकते हैं. बट व्हेन यू give the structure of New India at 75, then you can't write rural mission, you can't write any other mission, because these are the components that have been covered under this new strategy for New India at 75. ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. यस सर.
Now next part is inclusion, जिसकी हम लोग बात अभी कर रहे थे, inclusive. हालांकि इंक्लूजन के बाद मैं बहुत डिटेल करने जा रहा हूं थोड़ी देर के बाद. यहाँ पर इंक्लूजन इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसकी बात हमने थोड़ी सी पहले की थी और अभी और आगे बातें करेंगे. When I told you that inclusive growth is the only central focal thing in the history of planning in India which have been included twice in two successive plans, that is 11th plan as well as in 12th plan. That is why it is very important. And here 12 areas of inclusion have been identified by India. School education, higher education, teacher education and training. Means 3 points of education system where it should be inclusive. Then skill development, public health management action, comprehensive primary health care, human resources for health, universal health coverage. Then nutrition, gender, senior citizens, persons with disability and transgender persons. Then lastly, scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and tribal group and minorities. These are 12 areas. Please read it and tell me if you have any doubt the meaning of any component of these 12 areas covered under inclusion component. I hope Sir, you read you all the 12 points. Still you have any doubt in any point? No, sir, I have not. I'm not getting your voice. Sir, universal health coverage. If somebody has some doubt, just please tell me so that I can give you the meaning. Okay, universal health coverage. Okay, one point you have mentioned. Other point, any other point? Universal health coverage, in simple words, when the health care services are available for every person, within the reach of every person, universal. Suppose we say universal immunization for children. It means all the children's must be covered under immunization so that they are protected from diseases. That is universal immunization. जैसे कहते हैं ना, एक खसरे का टीका लगना चाहिए, अब सबको लगना चाहिए, सबके पहुंच के भीतर हो. That is universal. Right now we are moving towards universal coverage or against COVID. कि सब लोग कोविड के 2 टीके जरूर लगवा लें and after उसके बूस्टर लगा. That we are still away from that universal coverage so that this herd immunity is developed. Universal means when it is available for everybody, health services which are required for a particular segment, particular age group, particular gender, should be available for everybody and all must be covered under it. Only then the total health of the people will be better. That is the important thing. आसान होगा. सब समझ आ गया यूनिवर्सल का मतलब क्या है.
यानी सभी लोग जो हेल्थ सिस्टम, खासकर रोगों से बचे रहने की क्षमता विकसित करने के लिए जो भी हेल्थ केयर चाहिए, उसके अंतर्गत वो अवश्य शामिल हो सकें. दैट इज यूनिवर्सल. Is it okay? Yes, sir. In many areas we use the term universal banking. Means when a bank is able to provide you all types of financial and banking services and products, they're called universal banking. Universal means हिंदी में है व्यापी, सर्व सुलभ, सर्व उपलब्ध, सभी लोगों का स्वास्थ्य सर्वव्यापी हो सके. दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. Like all of us are covered under चिकन पॉक्स इम्यूनाइजेशन. तो बच्चों टीका लग जाता है कि उनको आगे चिकन पॉक्स न हो पाए. दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. Okay, is this okay? Yes, No, sir. any other point? Any other point? Out of any other point? Okay. Sir, comprehensive primary Then health care. we are moving further. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है कि जहां पर फैमिली केयर सिस्टम विस्तृत हो, सुगठित हो और पूरा परिवार किसी हेल्थ केयर के लिए प्राइमरी हम लोग यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है वो आप देखते होंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. ये उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जहां पर हम अलग अलग साइज के पॉपुलेशन के लिए इन हिली एरियाज के लिए अलग नॉर्म्स हैं और प्लेन एरियाज के अलग नॉर्म्स हैं. तो कॉम्प्रिहेंसिव साथ लिखा हुआ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सर्विसेज हैं जहां पर आपको प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा, नॉट स्पेशलाइज्ड, लेकिन प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में. वो हो यानी वहां तक सब लोग अवश्य पहुंच सके. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, उसका विस्तार व्यापक हो, यानी पूरे देश में, चाहे वो हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्र हो, प्लेन एरियाज हो या अन्य ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थापना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से हो सके. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. अब बात समझ में आई कि नहीं? 3 टियर पे सबसे नीचे होता है हेल्थ केयर के लिए हमारा 3 लेवल का स्ट्रक्चर होता है. सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन 3 में सबसे ऊपर है, बीच में है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबसे नीचे है सब सेंटर्स. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसकी उपलब्धता, उसका विस्तार और उसकी सेवाएं कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से सभी लोगों तक पहुंच सके, ये यहां पर इंक्लूजन का हिस्सा है. यानी हेल्थ के लिए वो इंक्लूड हो सके, लोग सब चीजों उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की हो सके. सर माइनॉरिटी ग्रुप. अब बात आसान समझ में आ रही होगी ये पूरी बात. सर माइनॉरिटीज ग्रुप तो बड़ा आसान है. जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप्स, जनजातीय, अल्पसंख्यक समूह, इसमें कहां दिक्कत होगी आपको? यह भी भ्रम है. ये तो इतना पॉपुलर टर्म है माइनॉरिटीज.
कहाँ दिक्कत है बताइए, किसमें अभी दिक्कत है? ट्राइबल मतलब जनजातीय, ट्राइबल बहुत कम हो, मेजॉरिटी में ना हो, माइनॉरिटीज है, जो मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटीज है। मतलब आप सिटी संख्या की माइनॉरिटीज को देखेंगे तो भारत में है पारसी, पारसी इज द मोस्ट smallest minority group, and there are other minority groups also which are large in number but not majority. यहाँ पे minorities की बात करें ताकि वो इंक्लूड हो सके। जिन्होंने सवाल पूछा था बताएं, उनको समझ में आई बात की नहीं है? हाँ सर, आ गई समझ में। आपने ही पूछा था ये? यस सर, मैंने पूछा था। अच्छा, आपका मीडियम क्या, इंग्लिश है कि सर हिंदी है? इंग्लिश मीडियम। सर मैं पूछा था उन सबका इंग्लिश मतलब मीडियम में माइनॉरिटी नहीं समझ पा रहे, थोड़ी हैरत है मुझे। नहीं सर, मुझको वो चीज उसका तो मीनिंग क्या समझ में आ पूछे गया, पर बताए, कोई वो दिक्कत समझना नहीं। था कि उसको डेवलपमेंट कैसे होगा, वो उसको इंक्लूड करने का फायदा क्या होगा, ये पूछना था। उसको इंक्लूड करने का मेन मोटिव क्या होगा? क्योंकि क्योंकि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी भारत की इस विकास की यात्रा से, इस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ से अभी से समूह वंचित हैं, उससे अलग थलग हैं। जहां तक विकास में भागीदारी और ऑपरेशन इन डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट दोनों उन समूहों तक समुचित रूप से नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उन तक ये पहुंच सके, समाज का समावेशी हो सके, ये उद्देश्य है। क्योंकि आपका जो एरिया है, टॉपिक है, वो है इंक्लूजन। बात समझ आई कि नहीं अभी कुछ? यस सर, समझ में आ गई। अगर आपने प्रश्न पूछा तो हाँ, समझ में आई कि नहीं बताइए? सर समझ गए, सर समझ गए। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ सर समझ गए। नहीं, आपने पूछा लाभ क्या होगा, ये बताइए। कि उसके ठीक ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है, जो 12 एरियाज हैं उसमें से 10वां एरिया क्या है? 10वां पढ़िएगा। सर जेंडर। जेंडर मतलब क्या है? जेंडर का हिंदी में क्या है? जेंडर का मतलब सर लिंग, मतलब मेल और फीमेल लिंग। मेल फीमेल। तो इसको अब मैं सवाल आपने पूछा, वही मैं पूछ रहा हूं। तो इसको इंक्लूड करने से क्या फायदा होगा? आपने पूछा ना माइनॉरिटीज के इंक्लूड क्या फायदा होगा, तो मैंने यहाँ वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अब आप बताइए, क्योंकि आपने पूछा नहीं, इसका आप जानते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको इंक्लूड करने से क्या फायदा होगा, जेंडर को। सर ताकि दोनों कम्युनिटी का मतलब मेल और फीमेल दोनों का सही से डेवलपमेंट हो, सही से दोनों दोनों को इंक्लूड करके, और दोनों को बेनिफिट्स, पूरा बेनिफिट्स मिले, जो गवर्नमेंट देगी सबको मिले वो चीज। नहीं नहीं, यहाँ जेंडर का मतलब और फीमेल दोनों से, फीमेल क्योंकि उसके ठीक नीचे एक पॉइंट है क्या, उसमें अंत में आइएगा तो लिखेगा ट्रांसजेंडर पर्संस, ट्रांसजेंडर दिया है, और 10वां पॉइंट आपका जेंडर है। तो यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन का मतलब है मेल को जोड़ना या फीमेल को जोड़ना। किसका क्या, किस पर फोकस कर रहा है ये? तो मेनली फीमेल्स पे। तो फायदा क्या होगा इसका, क्यों कर रहा हूं, वही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जो आपने पूछा था वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या फायदा होगा?
सर अभी भी कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज में सर या क्यों जोड़ना चाहिए? फीमेल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है, और कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स से अभी वंचित रखा गया, उसके लिए शायद किया गया हो सर। अभी भी इतना कई कहने की ऐसे आवश्यकता ही areas- नहीं है। हम लोगों ने इतना पढ़ा है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, उतना सब पढ़ाने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं बता पाएंगे, क्या फायदा? उतना दिन हम लोग उतना मेहनत कर रहे थे। पूरा मैंने स्मार्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाया, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। GDI पढ़ाया, GII पढ़ाया, फिर भी आप उसको नहीं अगर एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने, जब यही सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप जब जाएगा आप जाएगा ना पढ़े आप कि लेवल पर जेंडर गैप इज अ बिग इशू। वी हैव जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, we have gender gap index, global gender gap index, global gender gap report, organizations in those reports cover the entire world. They also focus on the gender gaps. इतनी सारी बातें बताई थी। फिर हमने कहा कि स्मार्ट इकोनॉमिक्स मींस making gender more active, more involved in मैंने आपको थी। सिर्फ जेंडर की इंक्लूजन करना है, बिकॉज जेंडर एज ए होल आर एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो हमने जो चीजें पढ़ी थी कसना तो याद रखिए, और उसकी मीनिंग थोड़ा सोचिए। हमने उनको क्यों पढ़ा, हमने उसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके सिलेबस में एटलीस्ट कुछ मेजरमेंट के तरीके, इंडेक्स भी आप में शामिल किए गए हैं, जो हमने बहुत डिटेल में किया था। उन्होंने कितनी सारी चीजें बताई थी, एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। जेंडर बजटिंग है, जेंडर डेवलपमेंट, लॉट ऑफ जेंडर इश्यूज। ओके, चलिए। Then last area is governance, यानी सुशासन, यानी संचालन प्रणाली को बेहतर बनाना। It includes 7 areas: balance regional development, that is transforming aspirational districts. वहां पे स्मार्ट सिटीज था, यहां पर जो जिले विकसित होने की दिशा में है उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको ऊपर ले जाना। द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्व क्षेत्र, लीगल, जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स, कानूनी, न्यायिक तथा पुलिस सुधार, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, लोक सेवा सुधार, मॉडर्नाइजिंग सिटी गवर्नेंस फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नगरीय के लिए जो नगरीय शासन प्रणाली है उसको आधुनिक बनाना, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, एंड डेटा लेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। शासन तथा नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी आधारित निर्णय लिया। These are 7 areas of governance identified by नीति आयोग। हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर यूजलेस without administrative
and judicial reforms. जब तक हम प्रशासनिक सुधार नहीं करेंगे तब तक आर्थिक सुधारों का कोई महत्व नहीं होता. These 7 points form that part of reforms. Already discussed so many things in economic reforms. Now this part is covering administrative judicial reforms. उसके आगे एक और वाक्य आजकल आता है, हालांकि कई वर्षों से है, कि we also need parliamentary reforms in India, so that at least there's useful, meaningful, fruitful discussion on the issues in the parliament also, not only hangama in the parliament. We also need parliamentary reforms. That is not a part of this segment of Niti Aayog. They are focusing on administrative and judicial reforms here. Any doubt part also? एक बार देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत हो बताएं. Otherwise, we'll again move towards our main issue, that is planning. ये तो हमने नीति आयोग के कुछ स्ट्रेटजीज की बात की यहाँ पर, कि how नीति आयोग is moving forward under the new plan system. Okay, let us revisit our main issue, that is planning. Now I have mentioned here long-term objective achievement plans. Point must be very simple. Getting out high economic growth rate. When you say long-term objective, it does not mean that this will be met only in the very long time period, but long-term means the objectives which were included in any plan, any 5 plan, and in later plans, those objectives were continued at some high or low level of objectives as priorities. Economic growth, high economic growth has always been the topmost priority in every plan. That was long term. Social justice, again, is an important objective of each and every plan. Then employment generation, self-reliance, education, modernization. It means these are objectives which were introduced in any specified plan, and that they have continued in later plans also. That is why I call long-term achievement plan. If you have any doubt, please ask me the question. I've just mentioned what are our plans. And these all objectives are still there in spite of the fact that we do not have now 5-year planning system. But these remains our priority concerns. Is it okay? So what is social justice? Social justice, I had mentioned earlier also, which means, which promotes equality, which reduces economic concentration, which promotes distributive justice. That is social justice. Which eliminates concentration of economic powers with only a few
groups of people or few rich peoples, it eliminates that. That is known as social justice. जहां पर आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रण न हो, संपत्ति का संकेंद्रण न हो, और जहां पर सबको एक न्यूनतम जीवन स्तर जीने के अवसर अवश्य प्राप्त हो सके. We must meet minimum needs of people. जहां पर न्यूनतम पूर्ति कर सके, that is a step towards social justice. भागीदारी हो सके, लाभान हो सके. ओके सर. जहां पर एटलीस्ट हमें एक न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर अवश्य उपलब्ध. दैट इज सोशल जस्टिस. What is human resources development? अब ये तो मैंने बात आपसे मैं नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कई दिन आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाया HD. उसके बाद भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे लगता है आपने कुछ समझ या कुछ पढ़ा नहीं. HDI में क्या क्या शामिल करते हैं? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन. सर हेल्थ लिटरेसी रेट विकास करते हैं SDI में. रॉन्ग. HDI में लिटरेसी रेट कहां पर है भाई? हमने HDI की बात की तो लिटरेसी रेट इनकम. इसके लिए आप एजुकेशन की बात कर सकते हैं. Please be little serious now. Please study what we have already discussed in detail in class. मैंने पढ़ा था, उसका बैकग्राउंड पढ़ाया था जो आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा. सेंस मीनिंग से लेकर मेजरमेंट, इंडिकेटर्स, रिसेंट स्थिति क्या है, सारा कुछ बताया था मैंने. और आपने पूछा ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जरा मैं फिर से आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूं. ये बताइए कि यहाँ ये मैंने दिखाया था आपको सिलेबस कि नहीं दिखाया था? बताइए हाँ या ना. Yes, sir. Say yes or no. बताइए कि हाँ क्या कह रहे हैं आप? अब यहां पर देखिए प्लान 8 में क्या लिखा हुआ है. प्लान 8वीं योजना का सेंट्रल फोकल थीम क्या है? 8 प्लान. बताइए, कोई तो जवाब दीजिए. इसमें क्या लिखा है 8 प्लान? Human resource development. You are not able to read. तो ये तो हम लोग कितनी डिटेल बात कर चुके थे. वहां पर भी हमने एक पॉइंट पे मैंने आपको की थी. अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन. 9th में देखिए लिखा हुआ सोशल जस्टिस. अब फिर वही ऐसे कैसे काम चलेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ लिखा हुआ है, इससे मैंने बात की थी. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इश्यूज. आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू. मॉडर्नाइजेशन पॉइंट से तो आपके फिर से रिपीट कर रहा. ह्यूमन रिसोर्स 8वां प्लान था. 8वां प्लान स्टार्ट होता है 1992 से. मैंने बताया था उसके पहले कि 9 में हमने सेंट्रल फोकल थीम क्यों रखा था, क्योंकि 1990 में 2 साल पहले HDI आया था. 90 से 92 2 साल प्लान गैप था. 92 में हम लोगों ने HDI को फोकस करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपना फोकल थीम बनाया था. और तब से वो आज तक लॉन्ग टर्म हमारे गोल का ऑब्जेक्टिव है. I have discussed in so length. प्लान पढ़ाने में मुझे मैक्सिमम लेना चाहिए था 1 दिन. 1 दिन में प्लान खत्म हो जाता है. बट आई हैव टेकन सो मेनी डेज.
But I'm very sorry to say that in spite of that hard work that I have put, no, I'm very sorry. I'm just repeating all those again and again, but instead of that, you are doing hard work that I can guess only. आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि हम लोग एक हफ्ते बाद मिलते हैं, आपको एक हफ्ते में सारी चीजें पढ़नी चाहिए थी, जितना हम लोग बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं. Then what I told you that objectives means these objectives were included in any specified plan, and after inclusion of that particular issue, it remained in the same issue in different plans also, because these issues are so important and so vast in its coverage that it is not possible to meet these objectives within a short period of 1 or 2 years, or a medium period of 5 or 6 years, but they are the issues which are to be continued in many, many years. Only then we'll be able to meet these objectives. That's why I have used the word long-term objectives of Indian plans. Now, next part is very interesting, very important, and we have already discussed a little, and one very important concept later. The question has been asked so many times in almost all the examinations. I'm just moving to. Now, there is one interesting in Hindi. How? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. टपकना, down. Is it for everybody? सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है क्या हमारी? Yes, sir. 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 ब्रेक हो रही है. Sir, you are totally audible, sir. देखिए, दो तरह की आवाजें आ रही है. One says that I am totally audible. So now it is audible, but earlier it was breaking. जिनको लग रहा है ब्रेक हो रही है, no, it was breaking because I was not happy that time. 1 minute ago I was not happy because I was not happy. जब आप हैप्पी रहते हैं तो आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है, या आप वो वर्ड क्लियर सुनना नहीं चाहते हैं तो आपको लगता है ब्रेक हो जाए तो अच्छा ही आवाज वहां पर. क्योंकि आपने पूछा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने कहा इतना सारी बातें मैंने की थी. किसी जेंडर की बात की तो भी अच्छा नहीं लगा. मैंने इतनी सारी बातें मैंने पहले की थी, इसी चैप्टर में की थी, बहुत महीनों पहले नहीं की थी. फिर भी आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी सारी बातें इतनी मेहनत से की लेकिन सब बेकार हो गया. तो मुझे तकलीफ होती है कि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डिफरेंट और बेहतर तरीके से पढ़ें, सीखें. वरना जो कुछ प्लानिंग है हम लोग मैक्सिमम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं. हम कोर्स प्लानिंग 2 दिन में खत्म, ये कोई फायदा नहीं. आई एम जस्ट, इसलिए मैं बार बार सवाल पूछता हूं, कोई शब्द बताएं तो दिक्कत हो, हम उसको बहुत तरह से एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें. देखिए उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको ना. जो हम लोगों ने पढ़ लिया तो उसको कम से कम फिर से पढ़िए, सोचिए और अपना भी कुछ जोड़िए. इट इज नॉट ओनली द क्लासरूम टीचिंग, इट इज, डोंट टेक इट एज स्पून फीडिंग ओनली. हैव योर ओन आइडियाज आल्सो हाउ टू एक्सपेंड दैट. थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस भी अपना डेवलप कीजिए. हम तो यहाँ पे आपको एक केवल आपको आइडिया दे रहे हैं, कुछ चीजें दे रहे हैं, आप उसको और विस्तृत करना ये आपका काम होगा ना.
इसलिए जब तक आप उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, उस पर सोचेंगे नहीं, तो फिर भूल जाएंगे फिर बार बार। अगर आप भूलते हैं इसका मतलब आपने कभी उसको रिपीट किया। और याद रखिए, जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अगर सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपसे एक बात की थी आपसे, आपने जो कुछ पढ़ा है आप उसको रोज उसको रिवाइज जरूर कीजिए, रोज रिवाइज, डेली रिवीजन इज मस्ट। में टाइम लगता है, रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है। आप एक चैप्टर जिसको आप 1 वीक में पूरा पढ़ के समझते हैं, जब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो इट विल टेक नॉट मोर देन टू रिवाइज, बिकॉज आप पूछ चुके हैं, केवल रिवाइज करना है। जितना रिवीजन आप करेंगे उतनी आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको याद रहेंगी, चीजें आसान लगेंगी। इसलिए जो बातें मैं पहले ही इतना डिटेल कर चुका हूं, तो आप फिर से जब सवाल पूछते हैं, इसका मुझे अंदाज होता है आपने उसको एक बार भी पढ़ के देखा नहीं कि हमने क्या पढ़ाया था। इसलिए जब मैं आपसे वो बात कहता हूं तो वॉइस ब्रेक हो जाती है, और जब कुछ नई बात कहता हूं तो वॉइस ब्रेक नहीं होती है। एनीवे, ट्रिकल डाउन और फिल्ट्रेशन में लोग रिसाव, टपकन या छनन, छानना, फिल्टर करना, छानना, ये भी कहते हैं। मैंने नीचे रेड से कि एक्चुअली ये जो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इथिकल है। ये कंसेप्ट को नहीं दिया है, नाम लिखा है हमने विल रॉजर्स, अ ब्रिटिश थिएटर इंडियन, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन यूज्ड द टर्म ट्रिकल डाउन इन अ प्ले। उन्होंने एक कॉमेडी प्ले में इस शब्द का यूज किया था, उसको हम लोग यहां पर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग यह है, जब हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव्स को हाईएस्ट दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगा तो उसके बेनिफिट्स विल परकोलेट डाउन, उन टिप्स हैं वो भी पूरे हो पाएंगे। दैट इज गिविंग इकोनॉमिक ग्रोथ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड बिलीविंग दैट the benefits of high economic growth will filter down, will trickle down, will percolate down, and it will benefit the poor people also. High growth rate will be able to create more employment. That is, it will remove unemployment. High growth rate will attack the inequality. High growth rate with high growth rate, we will be other also. That is basically the meaning of trickle down. देश को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करना और यह सोचना कि उच्च समृद्धि के लाभ नीचे की ओर टपकते हुए, बहते हुए, रिसते हुए, छनते हुए पहुंचेंगे और वो अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होंगे। Now you read the points. It was thought that the solution to problem of poverty and equity would come through trickle down rather than a planned attack directly on these problems. The benefits of higher incomes, growth means income, were expected to trickle down in 3 important ways. ये सोचा गया था कि जब ग्रोथ या इनकम बढ़ेगी तो उसके लाभ 3
मार्गों से, 3 महत्वपूर्ण मार्गों से नीचे की ओर आएंगे। नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्क वुड बी क्रिएटेड फॉर द लैंडलेस लेबरर्स। नंबर 1, जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर जनित होंगे, इससे बेरोजगारी दूर होगी, उनकी आय बढ़ेगी, etc. Creation of demand for milk and vegetables which are well suited to small plots of the poorer farmers. जब देश की आय बढ़ेगी तो मूलभूत खाद्यान्नों के अलावा दूध की मांग बढ़ेगी, फलों सब्जियों की मांग बढ़ेगी, और ये जो चीजें हैं वो छोटे छोटे जो पुअर फार्मर्स हैं उनके छोटे छोटे खेतों में उत्पन्न करने के लिए संभावनाएं अधिक बनाती हैं। It will also benefit the poorer farmers and other poor segments of the community. Third point is the increased expenditure of the wealthier farmers on non-food products would create work opportunity for landless farmers. जब धनी किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो वो खर्च बढ़ाएंगे, जब खर्च बढ़ाएंगे तो गैर खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी, और जब गैर खाद्य उत्पाद मांग बढ़ेगी तो बहुत सारे उद्योग धंधे भी आगे आए और यहाँ पर उनको भी कार्य करने के रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। That is the idea of the trickle down. Giving growth the highest priority, being the high growth rate will ultimately reach to the lower segments and it will benefit the poorest members of society also through percolation effect or downward effect from top to bottom, from growth to lowest point effect, etc. That is basically trickle down. In other words, we can also see this thing in other words like this. Taking out the proposition that economic growth benefits the poorest members of a society through the percolation effects. Percolation means reserve of increased national income on demand for labor rather than through explicit measure to help them. यानी सीधे श्रमिकों को कोई काम में लगाने की बजाय ये सोचना कि उच्च समृद्धि के कारण उनको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, निर्धनतम लोगों को लाभ मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली ट्रिकल डाउन अप्रोच। बट अब लास्ट पॉइंट उससे कंट्रास्ट है, बट ट्रिकल डाउन हैज बीन डिसक्रेडिटेड, किंतु ट्रिकल डाउन की आलोचना हुई है और अब ये स्वीकार किया गया है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट economic growth only poverty if accompanied by a specific economic and social policies. अब ये हमें लगने लगा है कि ट्रिकल डाउन वास्तव में लाभ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि लाभ तब होगा जब ग्रोथ को हम प्रायोरिटी तो दें, किंतु साथ साथ कुछ विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक नीतियों को भी लागू करें, तभी हम पॉवर्टी में कमी कर पाएंगे। केवल ग्रोथ से कोई लाभ नहीं होगा, केवल ग्रोथ से आप रोजगार, केवल ग्रोथ से आप निर्धनता उन्मूलन, अगर ये सोच रहे हैं तो ये उचित नहीं है। दैट इज व्हाई ट्रिकल डाउन हैज बीन डिस्क्रेडिटेड। आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रिकल डाउन वास्तव में सच सिद्ध हुआ होता तो फिर हम लोगों ने मनरेगा स्कीम क्यों घोषित की होती, फिर जो कि सीधे सीधे रोजगार की योजना है। एंड वी हैव रियलाइज्ड दैट ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली पाथ टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एटसेट्रा. We need some specific policy measures also along with growth. Only then we will be able to face these challenges more effectively. Tell me, is it okay now? Trickle down? Yes, sir. Yes, sir. Now,
I have discussed two important points. One is not that big, but one is big. That one point which is very, very important, that is called Hindu growth rate. I have mentioned number of times Hindu growth rate. And one point is inclusive growth that we are discussing right now. Now, Hindu growth rate and then inclusive growth. Inclusive growth is quite interesting, very big also. And we have inclusiveness meaning and so many things. I have to discuss so many things about inclusive growth. And then so many questions, very important questions, because we expect the full question on inclusive growth in many examinations, including IES, inclusive growth. And recently we have an inclusive development index also, introduced a couple of years ago by World Economic Forum. So unless we understand inclusive growth, we will not be able to understand what is inclusive development index also. But it will take little time. Now let us complete today at least Hindu growth rate. It will take not more than 10 minutes to complete it. Then on next day, we can have inclusive growth. I will devote at least 2 periods or at least 2 or 3 hours to understand what is inclusiveness. It is a little longer concept. Now Hindu growth rate. I have given a very brief idea and point that will cover entire perception of Hindu growth rate. Because in every point you can expect questions. First, I have written Professor Raj Krishna, who was a member of Planning Commission that time. He presented a paper, research paper, titled India's Sticky Economy and Some Non-Economics of Non-Performance. That was the title of the paper. He presented this paper in the annual conference of American Economic Association held in Washington in December 1981. We're talking about 40 years ago. Right now it is December 2021. It was 1981. 40 साल पहले की बात हम लोग कह रहे हैं. प्रोफेसर राजकृष्ण उस समय वो भारत के योजना आयोग के सदस्य थे. उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग में अपना एक पेपर प्रस्तुत किया था, इंडिया स्टिक इकोनॉमी. स्टिक मतलब चिपक जाना, ठहर जाना, अवरुद्ध हो जाना, स्टिक हो जाना. उस पर एक उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था और उसमें उन्होंने ये एनालाइज करके बताया था, जो सेंटेंस है, Rajkrishna had believed that the economy was caught in the low level equilibrium trap of slow growth. That was 3.5% annual growth rate. उन्होंने 81 से पहले 50, 60 और 70s के 3 डिकेड हो चुके थे. 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 3 दशक बीत चुके थे. तो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ही एनालाइज्ड एंड कंक्लूडेड दैट इंडियन इकोनॉमी वाज कॉट इन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप ऑफ स्लो ग्रोथ. उन्होंने यह विश्लेषण दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी समृद्धि के निम्न स्तरीय जाल में फंस गई है. And that was 3.5% annual growth rate, जो कि 3.5% वार्षिक growth rate का था. This was known as Hindu growth rate. This 3.5% low growth of the GDP per annum was termed as Hindu growth rate. The term Hindu growth rate carries a pessimistic note. जो शब्द है हिंदू वृद्धि दर, ये एक निराशाजनक दृष्टिकोण व्यक्त करता है. As an intangibility as Hindu way of life, जो ये कहता था इस प्रकार से हिंदू जीवन में अंतर्निहित अपरिवर्तनीय देख सकते हैं, वैसे अर्थव्यवस्था में भी अंतर्निहित अपरिवर्तनीय. Economy is also facing the inbuilt changes. At that time, you have to talk about that time. वो
स्वतंत्रता के प्रथम 3 दशकों की विश्लेषण की बात करें तो 81 तो उन्होंने पब्लिश किया पर ये उसके पहले 3D के Sir, voice clear नहीं है. Sir, your voice is breaking. For everybody, voice is breaking. For everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. now breaking. Sir. Yes, sir. Is okay. Is it okay? Break. What breaking? No, Yes, sir. sir. Or Breaking. okay? Yes, Yes, sir. breaking. Sir, अभी भी break हो रही है, sir. Break हो रही है. Sir, This is breaking, all sir. network problem. Then we can do one thing. We can stop today and we can meet on the next day. Okay. Now tell me one thing. Are you available during vacation also? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Because tomorrow onwards, university will be closed. If we meet couple of times and during winter vacation, we can cover a significant part of our discussion also. Okay, sir. So that I want to take at least 2 days inclusive growth. That is very, very important. Okay. Number one. Number two. I want to ask you. One of persons from Calcutta, I have requested him to take two classes on Saturday and Sunday next Saturday, that is 25th, 26th, and the topic is steps of statistics for economics. Steps of statistics for economics. Although it is not a part of a syllabus, because this was a part in BA1 and this will also be a part in BA3. Statistics is not a part of BA Part 2, but actually I am planning this special 2-day lectures, 1.5 hour per day for 2 days only, Saturday, Sunday, basically for the students of MA. Now tell me, are you also interested to join the classes, these 2 classes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Steps Yes, of sir. statistics for economics. Very, very, very elementary class, but very interesting class. And we must know actually what we require for better understanding economics, that is mathematics and statistics, and a little higher level of these two means econometrics, which is actually not a part of your syllabus in UG right now, but from 2023 under the new education policy, the entire syllabus will be changed, in which econometrics will also be a very important part. And I tell you, if you want to go for any competition where economics, you are taking economics, then you must be very good in elementary mathematics, statistics, and econometrics also. This is a weak point of most of the universities in Uttar Pradesh, Bihar, and so on. These parts we are lacking. But very strong in Calcutta, Odisha, and Tamil Nadu, and Western in India, they are very strong. But we are lacking in this area. That's why I have introduced a person from Calcutta to at least have 2 classes on this part, very basic things. And if you find interesting, then I may request him again for some days to talk to you on some other areas also. Then we can do one thing. If you are saying that you are interested, then I will share the link. And you can join through that link online for 2 days. I will have not decided exact timing and date, but most probably it is 25th and 26th of December. And timing will be 9 a.m. to 10:30 a.m. 1.5 hour, 2 days. Is it okay now?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you say yes, sir, it means my voice was not breaking when I was cracking this news to you. Was it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. The things you want to listen, that those things voice will not break. Otherwise, it will break. Okay. Now today is Friday. Saturday is Sunday. Then can we meet on Sunday? This Sunday? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But timing will be not 8 a.m. Sunday it will be 10 a.m. 10 a.m. Is it okay? Okay, sir. Okay. Yes, sir. I hope that there is no clash of any other paper or the other subject for you on Sunday. This Sunday. No, sir. No, sir. Okay. Then No, this sir. Sunday we will have we'll have a class on our own class, and on Sunday only I will share you the link for the two classes of statistics for the economics. That is will be held on 25th, 26th. Okay. Okay, sir. Or there is any other group where I can share this in the link. I don't know whether you have any WhatsApp group or so in which I can share. Or I can do one thing. I can send you the email, because I have the email numbers of all of you. I can send you the email. If your email is correct, you will receive the email also. Whatever you tell, that I will follow that system. So what you prefer? Sir, email. Email. Through sir. email. Email. Okay, but ensure that your email ID is correct. That what you have filled in your admission form, that email ID is there. When you are admitted to BA Part 2, you must have filled your biodata form, and I hope each of you have already filled the biodata form. And then I will send you the email about those 2 lectures, and you can join lecture through that link that I'll share with you. Okay. Okay, that's fine. Okay, that's fine. And then we are meeting again on Sunday at 10 a.m. Sunday at 10 a.m. This Sunday at 10 a.m. I mean, day after tomorrow. Okay, thank you. Thank you so much. सर जो आप पढ़ाएं उसका PDF पहले आप उसको पढ़िए, PDF तो हम किसी दिन शेयर कर लेंगे. पहले पढ़ लीजिए, फिर PDF शेयर कर लेंगे.